प्रजापतेर्विष्णो परां प्रेयसी तद्वक्षस्थल नित्यवासरसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। మంగవరద గోవింద గోవింద. మీ యొక్క తల్లిదండ్రులను, గురువులను, కులదైవాన్ని ఒకసారి మనస్ఫూర్తిగా ధ్యానం చేసుకోండి. సంకల్ప విధానం తెలిసిన వారైతే సంకల్ప ముద్రలో కూర్చోండి. ప్రాణాయామం చేసి సంకల్ప ముద్రలో కూర్చోండి. లేనివారు బాగా గాలి పీల్చి 3 సార్లు వదలండి. నమస్కారం చేసుకోండి. సంకల్ప విధానం తెలిసిన వారు సంకల్ప ముద్రలో కూర్చోండి. ఆడవాళ్ళు వాళ్ళని తగలండి. మీ కుడి తోడపైన ఎడమ చేయి ఇలా, పైన ఇలా కుడి చేయి పెట్టుకోవాలి. అందరూ ఒకసారి స్వామిని నమస్కారం చేసుకోండి. శేషాత్రినాదం సిద్ధమారినాదం రమాసనాదం రమణీయగాత్రం సురేంద్రనాదం సురపూజితాంగ్రిం శ్రీవేంకటేశం శరణం ప్రపద్యే. వందే లక్ష్మీపతిం దేవం శంఖచక్రగదాధరం విద్యామూర్తిం హయగ్రీవం శబ్దార్థజ్ఞానలబ్ధగే అమృతాత్మాదమేఘావం అమృతాహరణం విభుం పాంచరాత్ర ఆగమాచార్యం వందే వైకుంఠభూపతిం. అస్మద్గురుభ్యో నమః, అస్మత్పరమగురుభ్యో నమః, అస్మత్సర్వగురుభ్యో నమః, అస్మత్పరమేష్టిగురుభ్యో నమః. గురుభ్యశ్చ తద్గురుభ్యశ్చ నమో వాకమధీమహే వృణీమహే చ తత్ర ఆద్యౌ దంపతి జగదాంబది. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్య ద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యా పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోర ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్తే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశతమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబోద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే కృష్ణాకావేర్యోర్మధ్యదేశే ఆదివరాహక్షేత్రే సువర్ణముఖరీ ఉత్తరదిగ్భాగే పద్మసరోవరీ దీప్తసమీపే శుకపుర్యగ్రహారే వర్తమానే వ్యావహారికచాంద్రమాణేన ప్రభవాది షష్ఠి శ్రీవిజగాప్యుదే నామ సంవత్సరానామధ్యే మంగళకర క్రోధినామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే గ్రీష్మఋతు జ్యేష్ఠమాసే కృష్ణపక్షే తిథింజాయాం ప్రథమాయాం శుభదిదౌ వాసరః స్థిరవాసరయుక్తాయాం మూలానక్షత్రయుక్తాయాం శ్రీవిష్ణుయోగ శ్రీవిష్ణుకరణ శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదిదౌ అస్య భగవతో వాసుదేవస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య అగణితానేక కళ్యాణ గుణగణైకదానస్య అపారకారుణ్య సౌశీల్య సౌహార్త సౌందర్య వాత్సల్య ఐశ్వర్య మహోదదే జగద్రక్షణార్థం నవతీర్ణస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం జగత్కారణభూతాయాః శ్రీ పద్మావతీ నాయక్యాః ప్రీత్యర్థం రాజరాష్ట్రాభివృద్ధ్యర్థం
లోకక్షేమాభివృద్ధ్యర్థం విశేషతః యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య, అందరూ మీ యొక్క గోత్రము, మీ పేరు, మీ భార్య పేరు, పిల్లల పేర్లు అందరినీ స్మరించుకోండి, సంకల్పం చేసుకోండి. எல்லாரும் உங்கள் பேரு கோத்திரம் நட்சத்திரம் உங்கள் ஆற்றுல இருக்கிறவா பேர் எல்லாமே संकल्पम பண்ணிக்கோங்க. आपका गोत्र नाम स्मरण कीजिए, संकल्प कीजिए. अंदरू पलकंडी. मम क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुष अर्थ सिद्ध्यर्थम धन कनक वस्तु वाहन अभिवृद्ध्यर्थम महालक्ष्म्याः परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम विशेषतः మీరు దేనికోసమైతే ఈ యొక్క కళ్యాణోత్సవ సేవను నిర్వర్తిస్తున్నారో సమర్పించుకుంటున్నారో ఆ యొక్క కోరికను విన్నవించుకోండి. లేదా మొక్కుబడి అయినా కూడా అమ్మవారికి విజ్ఞాపనం చేసుకోండి. స్వామి అమ్మవార్లకు எதனால நீங்கள் இந்த கல்யாணோற்சவத்தை பண்ணுறீங்களோ அந்த संकल्पத்தை ஒரு வாடி தாயாருக்கு விज्ञापனம் பண்ணுங்கோ. जिस कामना के लिए आप एक कल्याणोत्सव कर रहे हैं उस कामना को एक बार विज्ञापन कीजिए माता जी को और प्रार्थना कीजिए. అందరూ ప్రార్థించుకోండి. అమ్మవారిని స్వామిని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించుకోండి. చెప్పండి. మమ మనోభీష్ట ఫల సిద్ధ్యర్థం సకల కళ్యాణ సమృద్ధ్యర్థం శ్రీ అలర్మేల్ మంగా సమేత శ్రీనివాస నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవం ఆచార్య అనేన సహాయేన కారయిష్యే. అందరూ ఒకసారి ధ్యానం చేసుకోండి. అలమేలు మంగ వరద గోవింద గో. ఒక గంట సేపు అమ్మవారి. ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః. నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. నమోస్తు హేమాంబుజ పీఠికాయే నమోస్తు భూమండల నాయికాయే నమోస్తు దేవాది దయాపరాయే నమోస్తు సారంగాయుధ వల్లభాయే நமோஸ்து தேவியே புருகுநந்தனாயே நமோஸ்து விஷ்ணோருசி ஸ்திதாயே என்று அந்த தாயாரை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திலே நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ அருணா இதோ எம்பெருமான் ஸ்ரீனிவாசனை சேவித்துக்கொண்டு பத்மாவதி தாயாரையும் சேவிக்கலாம். விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகிறது. பக்தர்களே, அந்த தாயாரின் மீதும் எம்பெருமானின் மீதும் பக்தியை வைத்து கோவிந்த நாமத்தை கூறிக்கொண்டு இந்த கல்யாண உற்சவத்தை செவித்துவிட்டு அதன் பிறகு அவர்களுடைய அனுகிரகத்தை பெறுவோம். ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே நமஹா என்று. திருச்சானூர் க்ஷேத்திரத்திலே நேற்று வரை தாயாருக்கு 5 நாட்கள் தெப்போத்சவம் விமர்சையாக நடைபெற்று நேற்று இரவு கஜவாகனத்திலே கூட அந்த தாயார் பவனி வந்தாள். இதோ இப்பொழுது இன்றிலிருந்து இந்த கல்யாண உற்சவம் திரும்பவும் ஆரம்பமாகியது. தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் கோவில் உள்ளே இருக்கும் மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனையும் சுத்தி புண்ணிய வாஜனமும் செய்து அந்த கைங்கரியத்தை ஆரம்பித்து வைக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. வேத மந்திரங்கள் மங்கள வாத்தியங்களுடன் ஆரம்பமாகிறது திருக்கல்யாண மகோத்சவம். ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நமஹா என்று அந்த தாயாரையும் எம்பெருமானையும் சேவிக்கலாம். மானாதீத பிரதிதி விபவாம் மங்களம் மங்களானாம் வக்ஷः பீடிம் மது விஜயதோ பூஷயந்தீம் ஸ்வகாந்தயா பிரத்யக்ஷாது ஸ்ரவிக மகிமம் பிரார்த்தி நிதாம் பிரஜாம் பிரஜானாம் ஸ்ரேயே மூர்த்திம் ஸ்ரீயம சரணஸ்துவம் சரண்யாம் பிரபத்தியே என்று சுவாமி தேசிகனின் ஸ்ரீதுதி ஸ்லோகம் இது. மது என்னும் அரக்கனை வெற்றி கொண்டு மகாவிஷ்ணுவின் திருமார்பிலே அமர்ந்து கொண்டு அவரது வக்ஷஸ்தலத்தையே பிரகாசிக்க இனவளும் ஸ்வர்ணாபரண பூஷித்தையும் அலங்காரவதியுமான ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாரை சரணடைகிறேன் என்பது இதன் பொருள்.
அந்த தாயாரின் ஸ்வரூபமே பக்தர்களுக்கு வேண்டிய வரங்களை அள்ளி வழங்கும் வரலட்சுமி. லக்ஷ்மி என்ற பதத்திற்கு இலக்கண ரீதியாக பல அருள் சக்தி அடையாளங்கள் பெரியவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். ஞானம், ஐஸ்வர்யம், சுகம், ஆரோக்கியம், தனம், தானியம், ஐயம் என்ற முதலானவைகள் அருள் சக்திகள். அதே பெரியோர்கள் தங்களை வணங்குபவர்களை 16 பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறார்கள். அந்த 16 பேர்களும் மேற்சொன்ன அஷ்ட சக்திகளோடு, அதாவது அசிமா, மகிமா, கரிமா, லகிமா, பிராரப்தி, பிராகாமியம், இசித்துவம், வசித்துவம் ஆகிய சக்திகளோடு சேர்ந்ததாகும். இவை அனைத்தையும் அள்ளி வழங்குபவளே அந்த தாயார், மகாலட்சுமி தாயார். அப்படிப்பட்ட தாயார் திருச்சானூரிலே எழுந்தருளி பத்மாவதியாக அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறாள். அவளுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இதோ விஸ்வக்சேன் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாவாசனம், அதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷைகளுக்கு கூட பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. செவிக்கலாம் அந்த மகாலட்சுமி தாயார் எனும் பத்மாவதி தாயாரை. எல்லா செல்வங்களையும் நமக்கு வேண்டும் என்று கேட்கும் பொழுது அந்த தாயார் அருளி செய்வாள். அந்த தேவேந்திரன் சமுத்திர மதன காலத்திலே பார்க்கடலில் இருந்து உதயமான ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை துதித்து அவளது கட்டாட்சத்தை பெற்று மீண்டும் நீங்காத செல்வங்களை பெற்றதாக தேவி பாகவதத்திலும் விஷ்ணு புராணத்திலும் கூறப்படுகிறது. அப்படி அந்த தாயாரை நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். மகாலட்சுமி அந்த தாயாருக்கு அஷ்டகம் சொன்னாலும், சஹஸ்ர நாமங்களை சொன்னாலும், கனகதாரா ஸ்தவத்தை கூறினாலும் அவள் நிச்சயமாக அருளி செய்வாள். கனகதாரா ஸ்தவம் என்பது மிகவும் பிரசித்தமான ஸ்துதி. ஆதி சங்கர பகவத் பாதாள் பிக்ஷைக்காக ஒரு ஏழை பெண்ணின் வீட்டிலே சென்று போய் நின்ற பொழுது பகவதி பிக்ஷாந்தேகி என்றதும் வெளியே வந்த அந்த பெண் திகைத்து நிற்க, அந்த பிரம்மச்சாரிக்கு கொடுப்பதற்கு எதுவும் இல்லையே என எண்ணினாள். உள்ளே சென்று தன்னிடமிருந்த ஒரே ஒரு நெல்லிக்கனியை கொண்டு வந்து அந்த பிக்ஷா பாத்திரத்திலே இட்டாளாம். அவளது நிலைமையையும் அவளது நல்ல மனதையும் புரிந்து मदन्तस्वधमाद्येषो यज्ञस्यामपतजोरगीणा ईश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो मातः प्राणेन शिरोपजो भूः पृथिवी पयसा पयोभिः यज्ञजे मा पुनीता हद्भिः सविधस्त्रिभिः शिष्ठैर्मन्वभिः दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता नाभो दिव्यङ्गसः दिव्येन ब्रह्मणा ब्रह्म पुनीमहे मावमाने रथ्येति सम्भक्तकं रसम् सपूतमस्ताति मातरिश्वना मावमानेर्यो अध्येति सम्भक्तकं रसम् सरस्वती दुहे नगं सत्पर्मधोदकं मावमाने स्वस्ति जने सुदुघाहि वयस्वतीः सम्भृतो रसः ब्रह्मणे समृतकं हिता मावमानेत्य सन्तुनः लोकमथो मां कामान् समर्थयन्तु नः देवैः समाहृताः माने स्वस्त्ययनी सुदुघाहि घटस्तुतः सम्भृतो रसः ब्रह्मणे समृतकं हिता येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा सहस्रधारेण अवमान्य पुनन्तु मायावत्यं पवित्रं राजामगं हिरण्मयं येन ब्रह्मविदो वजामं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सह वा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या राजा अप्रवणाभिपुनतुमा वेदामोर्जयन्त्या पुनातो भुवस्वः संयोरावृणीमहे यज्ञाय यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषज सन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
यक्ष्मणं सुमना असते अध्यवादधिवक्ता प्रथमादेव्याभिरगे अहेकश्च सर्वान् जम्भयान् सर्वाश्च यातु धान्याः इषाकुं हेडयेमहे असव्यावसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः तैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुरहाट्यः वैनं विश्वाभूतानि सदृभ्यो मृडयादिनः मास्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुषे अथो ये अस्य श्रुत्वानो हन्तेभ्यो करं नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराप्नुयोद्याश्च ते हस्तैवोपराजा फटोवोपा अवदत्यति नत्तकोदहत्वाक्सुते सुधे निषेव्यसंज्ञानामुखाशिवो न स्मना भव गन्धनकवर्तिनवाणवागं मुदा अनेकन्दस्येदव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेधर्मे धट्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्तायुधाय नादताय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् मृणक्तु विश्वतः अथो येषु विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां नमति सम्पदत्रयीद्या वा पृथिवी जनयन् देव एकः यज्ञस्विदासेदधिष्ठानमारम्भणं गतमस्वित्तिमासीत् यदि भूमिञ्जनयन् विश्वकर्मा विद्यामौर्णोन्महिना विश्वचक्षाः यज्ञस्विद्वनं कौसवृक्षासीद्यतोद्या वा पृथिवीनिष्ठदक्षुः मनीषिणो मनसा पृच्छते दुपद्यदध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन् याते धामानि परमानि या ममाया मध्यमा विश्वकर्मन्नुते मा शिक्षा सखिभ्यो हविषिस्वधावस्वयं यजस्वतनुवञ्जुषाणः वाचस्पतिं विश्वकर्माणमोदये मनोयुजं वाजे अद्याहुवेम स नो नेदिष्ठा हवनानि जोषते विश्वशम्भोरवसे साधुकर्मा विश्वकर्मण हविषा वावधानस्वयं यजस्वतनुवञ्जुषाणः मुख्यं त्वन्ये अभिजः सपत्नायस्माकं मघवासूरिरस्तु विश्वकर्मण हविषा वर्धनेन त्रातारमिन्द्रमकरुणोरवद्यं तस्मै विशस्तमनमन्तपूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथासते समुद्राय वयुनाय सिन्धूनां पतये नमः तदीनाकुं सर्वासां पित्रे जुहुता विश्वकर्मणे विश्वाहामर्त्यकं हविः पुरेणमुत्तरान्नयाग्ने घृतेनाहुता प्रायस्पोषेण सगं सुज प्रजया च धनेन च इन्द्रेमं प्रतरां कृधिषु जातानामसद्वशी सवेनं वर्चसा स च देवेभ्यो भागधा असत् यस्य कर्मा हविर्गृहेदमग्ने वर्धयात्वान् तस्मै देवा अधिब्रवन्नयं च ब्रह्मणस्पतिः विश्वे देवा अग्ने भरन्तु चित्तिभिः स नो भवति वदमः सुप्रतीको विभावसुः
पञ्चदिशो दैवीर्यज्ञमवन्तु देवीरवामतिं धर्मतिं बाधमानाः रायस्कोशे यज्ञपतिमा भजन्तीः रायस्कोशे अधियज्ञास्थात् समिद्धे अग्नावधिमामहानः वृक्षपत्र ईड्यो गृभीतस्तप्तं धर्मं परिगृह्याय जन्ता ऊर्जायज्ञमसमन्तरेवादैव्याय धत्रे जोष्टे देवश्री श्रीमणास्पदपया परिगृह्य देवायज्ञमायन् सौर्यरश्मिर्हरिकेशपरस्तात् सविता ज्योतिरुदयागम् अजस्रम् तस्य पोषा प्रसवं याति देवः सम्पश्यन् विश्वा भुवनानि गोपाः देवादेवेभ्यो ध्वर्यन्तास्तुर्वीतगं समित्रे समिताय जज्ञै तुरीयो यज्ञो यत्र हव्यमेतदः पावका आशिषो नोजुषन्ता विमान एष दिवा मध्यास्तापप्रिवान् रोदसी अन्तरिक्षं स विश्वाचिरभिजष्टे घ्राचिरन्तरा पूर्वमपरं च केतुम् उक्षासमुद्रो अरुणः सुपर्णः पूर्वस्य योनिं पितुराविवेश मध्ये दिवो निहितः पृष्ठिरस्माभिचक्रमेर्भजसपात्यन्तौ इन्द्रं विश्वाविवृधान् समुद्रव्यजसङ्गिरः रथीतमगं रथीनां वाजानागं सत्पतिं पतिम् सुम्नहर्यज्ञो देवागम् आचवक्षद्यक्षदग्निर्देवो देवागम् आचवक्षद् वाजस्य मा प्रसवेनोऽग्राभेनोदग्रभीत् अथा सपत्नागम् इन्द्रो वे निग्राभेनाधरागम् अगः उद्ग्राभं च निग्राभं च ब्रह्मदेवा अविवृधन् अथा सपत्कानिन्द्राग्नि मे विशोचीना यस्य राम् आशशिशानो वृषभो न युद्धाघना घनः शोभनश्चर्षणीनाम् सङ्क्रन्दनो निमिषयेकवीरः शतगं सेना अजयत्साकमिन्द्रः सङ्क्रन्दनेन निमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना तदिन्द्रेण जयत तत्साध्वयुधो नरैषु हस्तेन वृष्णा सैषु हस्तैश्वरिषङ्गिभिर्वशी सग्स्पृष्टा स युध इन्द्रो गणेन सगं सृष्टचित् स्वमवाबाहुसभ्यो ध्वधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता बृहस्पते परिदीयारथेन रक्षोहामित्रागम् अववाधमानः भञ्जन् सेना प्रमृणो युधाजयन्नस्माकमे ह्यविदारथानाम् गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमज्मप्रमृणन्तमोजसा इमगं सजाता अनुवीरयध्वमिन्द्रगं सखायो नुसगं रभध्वम् बलविज्ञायस्थविरप्रवीरः सहस्वान् सहमान उग्रः अभिवीरो अभिसत्त्वा सहोजा जैत्रमिन्द्ररथमातिष्ठ गोविद अभिगोत्राणि सहसा गाहमानो दायो वीरः शतमन्युरिन्द्रः दुश्चयवनप्रतनाषाढयुध्योऽस्माकगं सेना अवतु प्रयुत्स इन्द्रासान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुरयेतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रे इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञादित्यानां मरुतागुं शब्दमुग्रं महामनसां भुवनक्ष्यमाणां घोषदेवानां जयतामुदस्थात् अस्माकमिन्द्रस्वमृतेषु ध्वजेष्वस्माकं यायिषवस्ता जयन्तु
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तस्मानुदेवा अवताहवेषु उद्धर्षयमघवन्नायुधान्युत्सत्त्वनां मामगानां महागंसे रुद्रग्रहन् वाजिनान्यत्रथानां जयतामेतु घोषः उपप्रेतजयता नरस्थिरावस्वन्तु बाहवः इन्द्रावशर्म यच्छत्वनाधृष्या यथा सथा अवसृष्टा परावदसुरव्ये ब्रह्मसगंसिता गच्छामित्रान् प्रविशमैषान् कञ्चनोच्छेषः श्रेयो वसीयायत्सम्भोदं भूतं चित्रक्षेदप्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानादवग्रस्तपन्नभिदपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः कञ्चनाच्छिषः ब्रह्माणि ते वर्मभिश्चादयामि सोमस्तादायामृतेनाभिवस्ताम् पुरार्वरीयो वरिवस्ते अस्तु जयन्तं त्वामनुमदन्तु देवाः यत्र बाणाः सम्पदन्ति कुमारा विशिखा इव इन्द्राणस्तत्र वृद्धः विश्वाः शर्म यच्छतु प्राचीमनुप्रदिशं प्रेहि विद्वान् अग्नेरग्ने पुरो अग्निर्भवेः
विश्वाराधीज्यानो विभाग्योर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे क्रमध्वमग्निनानाकमुख्यगो हस्ते च बिभ्रतः इव पृष्ठगं सुवर्गत्वामिष्यादेवेभिराध्वम् पृथिव्या अहमुदन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षात्तिरमारुहम् दिवो नागस्य पृष्ठात् सुवर्ज्योतिरगामहम् सुवर्यन्दो नापेक्षन्ताद्यागोरोहन्ति रोदसी यज्ञये विश्वतो धारगुंसु विद्वागुंसो विदे निरे अग्ने प्रेहि प्रथमो देवयदाञ्चक्षुर्देवानामुतमर्त्यानाम् यक्षमाना भृगुविश्वजोषा सुवर्यन्तो यजमाना स्वस्ति नक्रोषा सा समनसा विरूपे प्रजेते शिशुमेघगं समीचीम् या वाक्षामारुक्वान्तर्विभाति देवा अग्निं धारयन्द्रविनोदाः अग्ने सहस्राक्षसतमोऽघ्नं सदन्ते प्राणाः सहस्रमपानाः तनुसाहस्रस्य राजयीशिषे तस्मै ते विधेमाजाय स्वाहा सुवर्णाधिगरुत्मान् पृथिव्या वंशीरपृष्ठे पृथिव्या श्रीरभासान्तरिक्षमावृणज्योतिषादिवमुत्तभान तेजसादिसमुद्रगमः आयुक्वानः सुप्रतीकः पुरस्तादग्ने स्वाञ्योनिमासीदधाध्याम् अस्मिन् सहस्रे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीरता प्रेद्धो अग्नेनीः पुरोणोजस्यागुर्म्याजविष्ठ प्रागुंसस्वन्तौ वयन्ति वाजाः विधेमते परमे जन्मन्नग्ने विधेमस्तमेधवरे सधस्थे यस्माद्योनेरुदारिताय रत्वे हवीगुंसि जुहुरे समिद्धे रागुंसवितर्वरेण्यस्य चित्रामाहं वृणे सुमतिर्विश्वजन्याम् रामस्य गन्वो दुहत्प्रपीनागुंसहस्रधाराम् पयसामहीङ्गाम् सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिरावृणस्वाघृतेन पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति ततो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।